अभी रिसेंटली आपने ये एक न्यूज अपडेट सुना होगा दैट ऑनलाइन गेमिंग को पार्शियली बैन कर दिया गया है. सो आज के हमारे इस वीडियो में वी विल बी delving into this question that exactly has online gaming been banned or we are trying to regulate online gaming. We will also be delving into the questions कि इसे रेगुलेट करने की जरूरत क्यों है, ये हमारे और आपकी लाइफ में how much has it affected, and third, which is all the more important, that there is a discussion, there is an ongoing discussion कि इस तरीके के ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करना या बैन करना, हाउ फार इट इज करेक्ट, बिकॉज इट इज ऑल्सो इन्वॉल्विंग द गेम ऑफ स्किल. इट हैज नॉट ओनली ट्राई टू रेगुलेट और बैन द गेम ऑफ चांस, बट जो गेम ऑफ स्किल होता है जिसमें टैलेंट इन्वॉल्व होता है, उस तरीके की भी गेमिंग को बैन करने की कोशिश की गई है. सो इन दिस वीडियो वी विल बी delving into this discussion that how far it is correct, or should we be demarcating the online gaming world into the game of skill and game of chance, because there is already a pending case in the Supreme Court with respect to the regulation of the online gaming of skill and of chance. But before we delve into this, all of this discussion, और ये discussion start ही क्यों हुई, we have an important update that we are starting up with our new batch. The batch for weekdays will be commencing on 22nd of September and 16th of October, and the weekend batch will be starting on 4th and 25th of October. So, talking about the enrollment details, we have already discussed this enough. Talking about the enrollment details, you can scan on the QR code or click on the link that is mentioned below, or dial on this number for further details. That is 9606900004 or 00005. So, talking about this bill, actually हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे पार्लियामेंट ने, लोकसभा followed by Rajya Sabha has passed this bill. The name of the bill is Promotion and Regulation of Online Gaming 2025. This bill was passed by Lok Sabha in a mere 7 minutes. सिर्फ 7 मिनट के डिस्कशन में लोकसभा इसे पास कर दी. Rajya Sabha has also passed this, and President has also given it an assent. On 22nd of August, this bill became an act. So, talking about the provisions of this bill, and before we delve into the provisions of this bill, इस तरीके के बिल लाने की जरूरत ही क्या थी? If we talk about the statistics, what is the need of introducing a regulation, a ban, partial or complete? इस तरीके की ban को introduce करने की need क्या थी? So, the statistics says that approximately 15,000 crores has been lost by Indians. इस तरीके की ऑनलाइन गेमिंग इन्वॉल्वमेंट में इंडियंस ने 15,000 crores लूज किया है. अब ये कंपनीज किस कंपनी को लूज किया है, किस तरीके के, इज इट सम रेस्ट्रिक्टेड गेमिंग्स और इज इट सम इंटरनेशनल गेमिंग इवेंट, ये इसकी स्टैटिस्टिकल डिटेल्स हमारे पास नहीं है. वी डू नॉट हैव ऑल ऑफ दीज डिटेल्स, बट वी डू हैव दिस फैक्ट कि इतना ज्यादा पैसा इन्वॉल्व हो रहा है इन ऑनलाइन गेमिंग. So, अगर हमें ये anonymity है कि whom are we paying, then this is something very, very dangerous. So, we do have some evidences, we do have some proof that there is involvement of some foreign countries such as Chinese companies who are siphoning off money from Indians because Indians are paying huge sums of money to the online gaming. So, इस तरीके की भी evidence है. Second important reason इसे क्यों रेगुलेट करने की जरूरत है is of course the mental stress, is of course the financial drain that is being carried out. ये बहुत ज्यादा mental stress, obsessive compulsion तरीके का एक mental stress जैसा behavior inculcate कर रही है amongst those people who are obviously involved in online gaming. Third important reason why do we need to regulate this is because कि हमारे पास ये एविडेंस है, we do have this proof that the algorithms that are used in online gaming have such kind of mechanism that they never create a net winner. ये net winner कभी भी नहीं create करते, को जो आज win करेगा वो कल lose करेगा. Ultimately the money is ultimately gained by the company who has created this kind of online gaming. So, this kind of algorithm ultimately ensures that the money that has been generated by public will gain some interest, the interest will be taken up by company और कुछ amount of money players में distribute कर दिए जाते हैं, और वो भी इतना ज़्यादा सम नहीं होता है जितना ज़्यादा amount collect किया गया है. So, this kind of mechanism which is created by the algorithms of the online gaming is also something very negative, which is draining out wealth from the public. Okay.
So these were some of the statistics, some of the need for introducing a regulation, a ban on the online gaming. Now, talking about the bill itself, talking about the act itself, it has majorly classified the online gaming world into three halves. One is esports, second is social gaming, and third one is known as RMG, that is real money games. ठीक है? So we will be talking about esports and real money games in little detail, but ये जो social gaming है, social gaming में government का restriction बहुत ज़्यादा नहीं है. They have called it that social gaming is just a recreational activity because it is not involving money. मनी या क्रेडिट्स या कॉइन्स या कुछ भी जो आप गेम में गेन करते हो, इस तरीके का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. सो सोशल गेमिंग विल नॉट बी फेसिंग एनी काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन. इन फैक्ट, for recreation, this will also be getting funds from Consolidated Fund of India. So social gaming will be promoted and advertised by the government of India through a certain amount of allocated budget. But the other two, that is esports or real money games, इसे regulate करने की जरूरत है. And that is what government has done. Talking about the real money games. Real money games इस act में define किया गया है. It has been defined as an online game which is the game of skill, of chance, of both. Now, why is it so important to differentiate the game of skill versus the game of chance? Let's say कि आप offline बैठ के chess खेलते हो, ठीक है? So this is an offline chess gaming. आप इसी चीज को अगर online करते हो, तो this is a game of talent. It is a game of skill, ठीक है? So जो game of skill या talent होता है, उसमें you have some assured returns. On the other hand, the game of chance जो होता है, you do not have an assured returns, और इस तरीके का एक एल्गोरिथम होता है जिसमें कभी कोई विनर बनता है. So it is very important to categorize whether the game is of skill or game is of chance. जब आप ऑफलाइन चेस को प्रमोट कर रहे हो, तो ऑनलाइन चेस को भी आप प्रमोट कर सकते हो. So that is the original debate by some of the critics across the country. जब आप गेम ऑफ स्किल को भी रेगुलेट करने लगते हो, then you are being skeptical about online gaming at all. ठीक है? So talking about the real money games consists of online games, और ये जो online game है, this can be as per the act, this online game can be of skill, of chance, or a combination of both. In any case, this will face some kind of ban. What kind of ban we will see. ठीक है? Plus इसमें एक और condition है, ये जो आप online game खेल रहे हो, this will be played after paying some amount of fees. ठीक है? तो this will be played after some amount of fees. Whom are you paying? You are either paying the organizer or making use of the wallet. ठीक है? एक तरीके का wallet या फिर कुछ और स्टेक, कोई क्रेडिट, कोई ऑनलाइन मनी, कोई क्रिप्टो करेंसी, किसी भी तरीके का आप पेमेंट कर रहे हो. तो all of this, because you are paying some amount of money to play the game for the registration, we are calling this as real money game. ठीक है? Now, real money game को define करने के लिए इस act में there is one more statement which is very clarifying that this is with an expectation of winning money or some other stakes. तो जब आप कोई पेमेंट करते हो, you have that intention, you have that expectation that I will win something out of this, and that is what is making the real money game very dangerous. This is the one that we were talking about कि 15,000 crores were lost. This is the one that we were talking about कि it is financially draining or mentally stressing. And this is the one that we were talking about कि ये वो mental stress या obsessive compulsive disorder inculcate कर रही है in human beings, in Indians specifically, because of online gaming. Because you have an expectation, that anxiety, that whether you will win or lose that much amount of money, that is why we are trying to, or government is trying to regulate the real money games. ठीक है? So एग्जाम्पल्स क्या क्या आ सकते हैं इसमें? आ सकते हैं पोकर, रमी सर्कल, फैंटेसी क्रिकेट, लूडो, ड्रीम 11, ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ रियल मनी गेम्स. नाउ इसे रेगुलेट कैसे किया गया है? द रेगुलेशन इज कि इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years और 1 crore अगर आप ऑफर करते हो. सो द कंपनी, बिकॉज दे आर ऑफरिंग दैट यू कम एंड जॉइन द ऑनलाइन गेमिंग वर्ल्ड, so then there will be an imprisonment up to 3 years or 1 crore in financial payments. Or if you are engaging in transaction authorization, let's say I am not Dream 11, but I am the one who is handling the Dream 11 money. So I am getting engaged in the transaction authorization, I am paying. ठीक है? So in all of this case, there are chances कि imprisonment हो सकती है 3 साल की, या फिर 1 crore financial penalty लग सकता है आपको. ठीक है? Secondly, imprisonment up to 2 years or 50 lakh अगर आप unlawful advertisement कर रहे हो. Now what is unlawful advertisement?
because we have banned such kind of online gaming. If you are promoting in your advertisement this kind of online gaming, so it will be called as unlawful advertisement, and in that case the imprisonment will be up to 2 years or penalty up to 50 lakhs. ठीक है. Government has allocated certain, that is computer emergency and response team, ये हमारी डिजिटल वर्ल्ड की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिजिटल वर्ल्ड की, यू कैन से दैट दे आर द केयरटेकर. So government has appointed that CERT-in will be responsible for banning all such sites who are responsible to promote real money games. ठीक है. So they will be banning all such sites. Now talking about the third one, that is esports. Now esports जो है ये रियल मनी गेम्स जैसे भी कंप्लीटली बैन नहीं है और सोशल गेमिंग जैसे भी कंप्लीटली प्रमोटेड नहीं है. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल नॉट बी फंडिंग इट. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को जो सोशल गेमिंग को फंड मिलेगा वो ई स्पोर्ट्स को नहीं मिलेगा. बट ई स्पोर्ट्स विल ऑल्सो नॉट बी फेसिंग सच काइंड ऑफ बैन्स सच एज द रियल मनी गेम्स. सो व्हाट इज ई स्पोर्ट्स? ई स्पोर्ट्स वो होंगे हु विल बी रजिस्टर्ड विद प्रपोज्ड रेगुलेटरी अथॉरिटी. एक्चुअली अभी लास्ट टू लास्ट वीक ही हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास्ड the National Sports Governance Act 2025. ठीक है. We have discussed the provisions of this bill. You can go to some of the previous videos to go through the provisions of this bill. जिसमें हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि BCCI को रेगुलेट नहीं किया जा रहा है. We have created a National Sports Board. ठीक है. So National Sports Board will be the regulator. Under the National Sports Governance Act, National Sports Board will be the regulator. और इस तरीके की बोर्ड या रेगुलेटरी अथॉरिटी से अगर आप रजिस्टर कर लेते हो देन यू विल बिकम एन ई स्पोर्ट. ठीक है. ये जो ई स्पोर्ट्स होगा दिस विल बी प्लेड ऑन पेमेंट ऑफ अ रजिस्ट्रेशन या पार्टिसिपेशन फीस alongside a performance based prize money. So this is what is ई स्पोर्ट्स. Now this will not be completely banned. This will be regulated. और इसे कौन रेगुलेट करेगा? That will be नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड. एग्जाम्पल्स हो सकते हैं ग्रैंड थेफ्ट ऑटो एंड कॉल ऑफ ड्यूटी. ठीक है. Now talking about the overall regulation, पूरे गेमिंग वर्ल्ड को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया what are the provisions they have mentioned under this act? First important provision कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये राइट्स रिजर्व करती है that central government will be empowered कि वो कोई भी और रेगुलेटरी अथॉरिटी बना सकती है. ठीक है. फॉर एंटायर गेमिंग वर्ल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एम्पावर्ड इटसेल्फ कि वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बना सकती है. सेकेंडली इट कैन ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी वो रिकॉग्नाइज करेगी, कैटेगराइज करेगी या ऑनलाइन रजिस्टर करेगी गेम्स को ही. ठीक है. थर्डली वी हैव डिस्कस दिस कि सुप्रीम कोर्ट में अभी एक केस पेंडिंग है कि गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल को कैटेगराइज किया जाए और इसमें किसे बैन करना है और किसे नहीं, किसे हमें प्रमोट करना चाहिए किसे नहीं. इसका एक केस ऑलरेडी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में एंड सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट टेकन एनी डिसीजन. ठीक है. Talking about the final and last legal aspect which is very important कि जो overall betting and gaming है this is as of now coming under the states list. So जो हमारे schedule 7 में union list, state list और concurrent list होती है उसमें state list के अंदर betting and gambling अभी तक आती है. Consequently states like तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश अभी भी किसी भी तरीके की ऑनलाइन गेमिंग को बैन करती है. Since 2020 Tamil Nadu and Andhra Pradesh have banned all kinds of online gaming. So these are the legal aspect associated to the overall gaming act that has been passed recently. As we discussed, कि Supreme Court is yet to decide on the game of skill versus the game of chance, which is the latest discussion associated to the online gaming world. Now with that we come to the end of this topic. If you have any doubt, please do let us know in the comment section below. Thank you so much and all the best.